Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is the second chapter. जिसमें first of all the links जो last time miss हो गए थे they would be there. उनके साथ connect करेंगे. And then क्या कहते हैं chapter number 2 which is regarding the portal. तो उसमें कहते हैं आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट होगा किस तरह हम लाइफ में चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स दी हुई हैं एंड हैव वी एवर मेड अ ग्रेटफुल लिस्ट जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया हुआ है and then the abnormality of water and how it travels cosmos से लेके फिर हमारे अर्थ में कैसे आती है and the purity and impurity of the water and can we call the water as a soup of life and the ancient beliefs in Japan and in Greek unke kya the an angelic reality of the water and this water has a link with the soul and the positive words at the end EI is the connection the positive kind attention and especially for with our younger youth उसके साथ क्या फर्क पड़ता है and then there are three scientists जो जिनका इस चैप्टर में जिक्र है and who are introducing the Renin concept the water process कि उसको natural state में कैसे वापस लाया जा सकता है and the concept of gaze and its link with the Islam concept and at the end of course that EI point so the links with the previous chapter first for example there is this new theory के ताउस हम phenomena के tahajjud के वक्त that is the time of 2 a.m. to 4 a.m. those three are specific vibration होती है which starts with the within the earth bedrock and they even tried to research on in 1980 but they couldn't find it the location was New Mexico and what is the reason maybe and it is from everywhere so and this vibration क्या कहते हैं this is felt not हर कोई नहीं इसे कर सकता because it is felt in heart and क्या कहते हैं जो हमारी audible level है 15 hertz to 20,000 hertz उससे just below है इसका कहते हैं level so not everyone of course can hear it and the Islamic point of view को अगर आप इससे connect करें so what is that Islamic point of view कि हमें तहज्जुद के वक्त उठने को क्या कहा गया is there a positive energy जो हमारे brain waves को accept कर रही है and now contemplated हम अपने life में कैसे इस time को use कर रहे हैं हम इसको loss कर रहे हैं या हम इसको useful बना रहे हैं Then there was another theory that was string theory जो उससे connect हो रही है basically string theory है क्या कि universe is made of vibration last time it was कि जो life है जो existence है that is vibration and there are identical strings for example when you take the quartz and when you take the electrons so what is the difference between both the difference is that both are at a different frequency vibration this theory string theory propose क्या करती है कि there is a higher dimension the basic science there is a god and that but they are coming towards that there is a higher entity this is just not a coincidence and then there is a parallel universes and they can be millimeter apart from us but why don't we sense them maybe because their vibration is hamari vibrations are out of that because we know our senses and the senses we know we are conscious and we are not conscious those have limits and then there was the scientist it has a really interesting say on this universe when you look at the universe has a choice and is this universe is unique and you can't create nonsense accidentally jo kehte hain ki just take big bang and that like these things are evolving so and अगर इतनी नॉनसेंस ये चीज है यूनिवर्स है कॉस्मो है so जब आप मैथमेटिक्स करते हो जब आप फिजिक्स इक्वेशंस करते हो तो वो कैसे कंसिस्टेंट आ जाती हैं बिकॉज द ब्यूटी इन फिजिक्स इज समटाइम्स आपने वो चीज डिस्कवर नहीं की होती बट वो आप उस मैथमेटिक्स एंड बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज आप उससे क्या कहते हैं उस चीज की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इसके आगे क्या है and it helps and other universes are being created right now but the problem with our universe and there is कि हमारी universe is stable but those universes जो अभी right now at any moment second microsecond बन रही हैं those are unstable so क्या ये तुक्का है कि हमारी universe stable है and क्या God has a choice क्या universe has a choice and then he relates string theory कि there is a one master equation which is M theory जो आपको give you everything in the universe and in mathematics predicts before even discovery an original universe which is unstable तो हमारी universe कैसे हुई थी there was a bubble and क्या कहते हैं उसमें से हमारी universe निकली थी and then there is a really interesting time concept कि हम human being time को कैसे देखते हैं कि past है present में अभी फिलहाल में हूँ and there is future and then there is cause and effect stuff but the thing is जब आप time को देखते हो ना time is a really interesting there is another interesting part जो cause and effect की theory है you can research on that and but the thing is
time is a really illusion. Now connect it with the wal asr and connect it क्या कहते हैं कि अगर affect हो रहा है कहीं कभी कहीं cause हो रहा है. So what is happening there? There are so many too many probabilities. There are too much simulation. For simulation जो आप लोगों में से code करते हैं, they might understand the if and else phenomena. और उस चीज को जो override का concept है वो क्या करता है कि every second right now we all have the choice कि whether you can listen it or not. आप उसको कुछ और कर सकते हो, आप multitasking कर सकते हो या focus होके कुछ कर सकते हो. So is there any link between this choice and the time thing? And let's move on next. So this is the multiverse concept, you know, कि कहते हैं ये एक dimension में है, half person पीछे और कहते हैं इस portal से वो next dimension में है, which is again the string theory कि you know these parallel universes can be, you know, हमारे ऊपर नीचे another dimension because we are the third dimension wherever you are sitting, and then fourth dimension, fifth dimension. So multiverse is like something like that. And then here it's like Surat Tariq, I guess. Surat Tariq जिसमें the concept is, you know, जब cosmos आपकी space expand करती है, so it bounces off. और जब क्या कहते हैं आपकी अर्थ क्या कहते हैं expand करती है तो the fissures अगर होते हैं जो सिर्फ last century में found हुए थे, discover हुए थे, and हमारी अर्थ जब expand करती है so it goes क्या कहते हैं it goes it cracks, and it was I guess Surah Tariq was-samai zati raju and wal ardi zati sada'ait. And then this portal concept again Einstein saying, you know, कि अगर earth है, and which is आप इधर string theory को भी relate करो, to entrance to this wormhole and then exit of wormhole into another space. So and the Surah Kahf को भी आप इधर relate करें. And you can also see this concept in क्या कहते हैं, there is a season on I guess Netflix, the Skinwalker Ranch. And then the simulation coders ki, you know, everything is at the end numbers. It's the game of number. Are human beings kyunki chalte hit the numbers because everything vibrates. And you can also go for the Matrix season, sorry, the series movies, and there are many others. So for that you have to first understand simulation. और अगर आपको simulation समझ आ जाती है उसके बाद आप वो season movies देखेंगे, it will make more sense to you. Then there is another theory जो Greg Brandon कहते हैं कि the more grateful I am, the more beauty I see. What is here going on in gratefulness? अगर आप इस्लाम में लाते हो तो that is alhamdulillah, और अगर आप वैसे लाते हो manifestation में other religions, Buddhism and all that, but something is really common in all those religions and non-religions, that is, you know, जो आपकी life में already है, you have to be, you know, thankful for that. You come to that positive frequency, higher frequency, and then manifest the next thing जो अपनी life में करना चाहते हो. For example, Greg Brandon इसको कहते हैं 3 steps में कह रहा है. First, ask without hidden motive, you know. कि आपके उस चीज से किसी को नुकसान ना हो, maybe that could be one interpretation, because there is never one interpretation. There are parallel universes, lots of things happening at the same time. And then he's saying कि, you know, be surrounded by your answers. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के आखिरी चैप्टर से पहले या अपनी लाइफ के आखिरी चैप्टर तक क्या अचीव करना है, या मरना है हम सब ने, तो वो वन गोल क्या है जिसको आपने ट्राई करते हुए मरना है. And be enveloped by what you desire. So first is your thought that is linking with your goal. Next is your thought, the feelings and emotions, amalgamation जिसमें आपकी वो desire, the positive desire जो सिर्फ आपके लिए self centered होके क्या कहते हैं benefits ना ला रही हो, बल्कि तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, and you know the high. So उसको वो आगे explain कर रहा है. You are having, like how it starts, you are having that emotional experience, you know, कि आप visualize जब चीजें करते हो तो क्या होता है कि आप visualize करते हो कि already वो चीज है, मैं इतने साल में ले लूंगा, of course with Allah subhanahu wa ta'ala that. And you are asking because जब आप request कर रहे हो अल्लाह ताला से, दुआ कर रहे हो, तो अभी इसका मतलब है present current moment में आपके पास वो चीज नहीं है. And then gratitude stay कि जब आप already उन सब चीजों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हो कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है, now you are, you know, setting that positive and higher frequency. And at the end visualizing is, अब आपको visualize करके in one word आप what can you say कि you are claiming के अब वो चीज present है, आप experience कर रहे हो. जब आप experience करते हो, आपकी सिर्फ body के अंदर experience नहीं होता, आपकी body में भी होता है और आपके बाहर भी होता है. बिकॉज वो एंड अनदर थिंग वो जो कहते हैं अपने गोल्स को, यू नो, जब भी आप सुबह उठें मिरर पे रखें, जहां भी आप जाएं, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. दैट इज अनदर थिंग यू कैन रिलेट इट टू. सो आपकी बॉडी चेंज होती है, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, लिंक इट विद द ईआई थिंग, और आपके बाहर क्या हो रहा है, आपका और आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन. एंड देन दिस थिंग द प्रॉब्लम राइट नाउ विद ह्यूमन बींग्स इज we are stuck with the physical body. हमें लगता है we are this, what we think, you know, but the actual thing is कि हम इससे कई ज्यादा हैं. The first step is that the level of बदन से निकल
निकल के अकल में, and अकल से निकल के रूह पे, and the question still is there कि mind and soul where exact they are, and intellect कहाँ बीच में fall करती है. So just a food for thought. And then Allah subhanahu wa ta'ala, and again they don't talk about Allah subhanahu wa ta'ala, they talk about Greg Brennan talks about the higher entity. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ये जो हमारी सारी एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू एंड दिस इज ऑल योर एनर्जी, तो इसको डिफरेंट नाम साइंस दे रही है. इट इज अ फील्ड एनर्जी, इट इज अ माइंड ऑफ गॉड, या मैट्रिक्स, या डिवाइन मैट्रिक्स, या नेचर्स माइंड. बट द पॉइंट इज, द फाउंडेशन इज द सेम कि आपकी वो कॉन्शियस चॉइसेस हैं. व्हाट आर यू मेकिंग? आप कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो, आदत से मजबूर हो, क्या कर रहे हो? पॉजिटिव, नेगेटिव, अबाउट की चीज लेके चल रहे हो? बिकॉज द लाइफ इज अबाउट यू लर्न इट, देन यू अनलर्न इट, एंड देन यू रीलर्न इट. तो वो जो आपकी फीलिंग थॉट्स के कहते हैं, ये एक पैटर्न बना रही हैं. सो वो आपके आगे जाके जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक भी है और जो आपकी इलेक्ट्रिक भी है, उसको भी चेंज कर रही है. सो you must become that thing. First you have to attract the right thing, you have to manifest that in yourself, and that which वो एक तरह से हम अपनी लाइफ में फिर वो चीज चूज कर रहे होते हैं. And if you see in Ali Rajulullah anhu context, the word Ali Rajulullah anhu says do business with Allah subhanahu wa ta'ala and you will profit. And that was really interesting that the heart is much stronger than electrically. The heart और आपके mind का comparison हो रहा है. And the 5,000 times stronger magnetic than the heart is 5 times stronger than that. So this is that magnetic flux. ये आप जब I guess metric में हम सब ने वो magnets, bar magnets के experiments किए हैं. So that iron and sand की जब होती है, if you place that magnet here, that this is the same, those lines, the phenomena is occurring inside us versus our outer side. And then the Bruce Lee said that that was really interesting, don't speak negatively about yourself even as joke. Connect this joke thing कि Islam में, even joke से भी मुमानियत क्यों की गई है. And our mostly miscommunications are based on the jokes because we are never on the same frequency, never same mindset. Especially when you are talking on cell and text and you are not physically present in front of each other, your body doesn't know the difference. Of course it doesn't know the difference. चाहे आप मजाक में कर रहे हो, चाहे आप उसको emotional slap कर रहे हो, जिस तरह भी आप बात कर रहे हो, these are the words, these are the energies. So words are the energies and cast spells, that's why it is called spelling. Change the way you speak about yourself and you can change your life. But what's the most important thing that you can relate to the subcontinent thing is that what you are not changing, you are also choosing. We just think I'll be fine and मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. It's never like that. It's the subcontinent mentality, and आपको इसका science and spirituality and आपको इस्लाम में भी मिल रहा है. And इसका आपको आयत मिलेगी सूरा, I guess it's सूरह नजम कि जिसकी कोशिश करोगे उसका मफहूम है तो आपको उसके हिसाब से दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी होगा. So related to that, the blaming excuses thing, what is it? It's exactly the low frequency. And then again Allah is saying conquering others take force. आप अपने locus of control से बाहर जा रहे हो जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है. But now अगर आप locus of control के अंदर आते हो और आप अपने अंदर जाते हो तो conquering yourself is the true sense. And now connected with Islam जो कहते हैं कि नफ्स के खिलाफ the jihad is afzal. So what is going on there? Now the chapter 2, which is about the portal, and the writer is starting with कि just sit whatever you are doing, अपने सामने पानी का ग्लास लो, उसे टेबल पर रखो, और अगर नहीं है just start imagining it, it's there. Now what is going on? आपके रूम है, आप रूम उसके थ्रू से ग्लास से देखोगे, या आपकी कोई विंडो है आप उसके थ्रू से क्या कहते हैं सीनरी देखोगे, or maybe the all over feeling जो आपके अराउंड है, जो आपके अंदर है, that is. But the point is that everything is being recorded by that water. Now the thing is then he shifts to the for granted stage. And क्या कहते हैं हम seldomly pause करते हैं कि लाइफ में इस चीज को थिंक करने में, हम थिंक तो करते ही नहीं है ना. सब कॉन्टिनेंट्स का प्रॉब्लम ही हमारा ये है, we are judgmental people. So how to change that? First become conscious, aware, and write it down. Manifestation writing has its own power. So another, for example, the breathing, आपको बगैर किसी टैक्स के हवा मिल रही है. The water inside us, आपको अपना हार्ट नहीं पंप करना पड़ रहा. That inner electrical magnetic flux, everything Allah subhanahu wa ta'ala is doing. And even when you say alhamdulillah, जब हमें छींक आती है, what is that? Because at that time that pulse of the heart stops. So shouldn't be like, so that's why Allah subhanahu wa ta'ala is saying, अब आप इसको कुरान पाक से कनेक्ट करें, फबीजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान.
So how many times do we think? And when you think about the concept of death, और आप उसको भी relate करते हो. So sunnat is like 3 times remember किया जाए, and cover आपको कितनी times remember करती है? That is 40 times per day. So let's think and take a step back what we are doing and how much we are thinking. And then the water concept, the structure molecules of water, when it's in liquid state, when it's in solid state, जब बर्फ होती है तो उसके बीच में specific क्या कहते हैं alignment, proper structure arrangement start हो जाता है. For example, writer starts with the mysteriosity. Okay, it's abnormal, बाकी liquids की तरह नहीं है, but there is another interesting also liquid copper, which is a conductor, which is also in liquid state. So उसका भी another just a throwaway, उसकी भी a comparison कर सकते हैं, which is pretty interesting. कमिंग बैक टू द बुक, तो वो मिस्टीरियस ऑफ वाटर को कह रहा है कि जब आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, और ये कहते हैं कंट्रारी टू अदर स्टफ, वो क्या कहते हैं हैवी स्टफ, सॉलिड स्टफ सिंक करते हैं वाटर के अंदर, नीचे वाटर के नीचे चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये कहते हैं आइस का जब है देयर इज दिस स्पेसेस बनने लग जाती हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में, और जब क्या कहते हैं वही आइस क्या कहते हैं लिक्विड स्टेट में जाती है, तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन देयर, क्या कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. You have to remember the density, mass over volume वाला formulation. इधर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपके पार्टिकल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, वो मूव करने लग जाते हैं, और वो जो इधर एम्प्टी स्पेसेस थी स्ट्रक्चरल, वो इधर से एम्प्टी स्पेसेस जाके खत्म होने लग जाती हैं. और ये कहते हैं दैट इज व्हाई लिक्विड इज हैवियर, लिक्विड नीचे होता है, और जो आपकी वो फ्रीजिंग टाइम पे अंटार्कटिका या ऐसी साइड जो ऊपर सॉलिड बन जाती है, तो वो आइस ऊपर फ्लोट कर रही होती है. एंड आगे ग्राफ आएगा, देयर यू कैन सी कि वो 4 सेल्सियस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 39 फ़ारेनहाइट, उस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट क्यों है. और फिर अनदर थिंग व्हाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज जब अबव कोल्ड टेम्परेचर एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है, तो उसके नीचे जो लाइफ अल्लाह ताला ने बनाई है लिविंग क्रिएचर्स, वो क्या कहते हैं स्टेबल होते हैं, वो अपनी लाइफ कैरी ऑन करते हैं. सो दिस इज दैट कि हाउ एक्स एक्सिस सम टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड दिस इज द हाईएस्ट वन. पहले नीचे से ऊपर जा रही, बट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, और फिर ऊपर से नीचे डेंसिटी जा रही है. And then he says कि water pure state is really difficult right now at the crunch stage, because उसके minerals को जो हम जिस process के through कर रहे हैं, उसके crystals को भी destroy कर रहे हैं, उसके minerals को भी destroy कर रहे हैं. For example, अगर example देते हैं tap waters 90 का angle, the stream water, ठीक है, हम उसमें impurities add करे जा रहे हैं. And then he relates it कि water is a very different thing, as in liquid state, क्या कहते हैं, it dissolves most of the substances. So can we say it's soup of the life, because ocean के nutrients are mixing in it, जो आगे जाके living creatures को अल्लाह सुब्हान ताला का वो अपना एक निजाम है. So and it is again the birth. So you can relate the animals and human life and even plants. And then he says कि जो ancient belief in Japan का वो discuss करता है कि water वो कहते हैं जहाँ water है there is a life. And what they also say कि जहाँ भी ancient belief for Japanese is what कि जहाँ से पानी rose करता है ground से, क्या कहते हैं that becomes a sacred place. And क्या कहते हैं उधर higher energy level होता है. And then he said that कि वहाँ उनका एक ये है कि the ideal spots are those, and they erect there जो उनकी shrines हैं, for example इस तरह हमारी मस्जिद्स हैं, so they erect those things there. Now the contrary, when you study architecture and history, the pyramids, the Safavid, the Umayyads, the Usmania, and so on, even ancient civilizations, and you connect it with Quran, the cosmology, the astrology, to all, so these are specifically turned towards the particular star. So that means there was the epitome of the civilization. हमें लगता है हम epitome है, we are not. हम बहुत गहराइयों में डूबते जा रहे हैं. They were. And what was that? कि उनको astronomy का भी इतना पता होता था. And so again, when you come to your own subcontinent, क्या कहते हैं Mughals and Safavids in Persia and Osmania, we all know. So what was there? उनका भी एक पूरा process होता था when you have to choose the site. It was just not like that. जिस तरह right now लाहौर में अगर आप architecture को देखो. And then when you concept इसको आप इस्लाम के भी उससे करो कि जहाँ अल्लाह सुब्हान ताला के जिन कौमों पे अजाब आया हुआ था, तो उधर से आपको सजेस्ट ये किया गया है कि वहां से जल्दी गुजरो. So what is it talking about? Is it talking about the positive and negative energy of that space? एंड देन क्या कहते हैं कि वाटर को जो अल्लाह ताला ने हमें एक क्लीनिनेस के लिए दिया हुआ है कि वुदू करो, वुदू नहीं तो तयम्मुम करो. द 4 प्लेटोनिक एलिमेंट्स में से जब आप निकालते हो द वाटर एलिमेंट एंड देन द अर्थ एलिमेंट, सो व्हाट इज गोइंग देयर कि वो जो एक प्रोटेक्शन लेयर बन रही है आपके इर्द गिर्द, इज दैट अ वाटर. एंड ऑफ कोर्स इफ दैट्स अ वाटर, सो उससे पढ़ने से या बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या हो रहा है, वो एंजेलिक रियलिटी है वर्सेस सैटर्न, बिकॉज सैटर्न डेफिनेटली डजंट वांट यू कि you be 24 hours all day wudu, never. And then the water something, ये तो हम कंक्लूड कर
चुके हैं कि आउट ऑफ द अर्थ. एंड देन देयर कम्स दिस साइंटिस्ट लुइस फ्रैंक, ही वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ एओवा. ही सेज कि वाटर ऑन अर्थ किस तरह आता है, लम्प्स ऑफ आइस होता है या लम्प्स ऑफ वाटर होता है. और फिर इसकी सर्च इधर से स्टार्ट हुई थी कि व्हेन सैटेलाइट फोटोज उसने स्टडी की, जो इट पजल्ड हिम कि ये ब्लैक स्पॉट्स क्या हैं, ये मिनी कॉमेट्स क्या हैं, ये जमीन पे क्यों फॉल कर रहे हैं. और फिर उसने जब ऑब्जर्वेशंस की तो दीज वर समटाइम्स 20 पर मिनट, और जब होल ईयर उसने ऑब्जर्व किया दैट वाज 10 मिलियन पर ईयर. एंड देन ही सेज कि उसकी थ्योरी जो उसने आगे प्रोड्यूस की थी कि बॉल्स बम्बार्डेड अर्थ के if we go for 40 billion years पीछे previously, so it started there. And then he was like, maybe then it's linked, फिर sea create हुए, oceans create हुए, and the same phenomena is going to there. Then again Louis Frank is saying कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ग्रेविटी है इसका अर्थ की एक अपनी ग्रेविटी है. अगर आप स्पेस में जाते हो हर चीज की अपनी ग्रेविटी है, पुल एंड पुश है. तो वो आइस कॉमेट्स क्या कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी पुल करती है, और क्या कहते हैं उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं. वंस दे एंटर द एटमॉस्फेयर, तो जो सन की हीट है वो उनको एवेपोरेट कर देती है गैसियस स्टेट में. एंड देन वर्ड जो अर्थ का 55 किलोमीटर जो स्पेस है, तो उससे दूर वो 55 किलोमीटर अवे वो गैस पार्टिकल्स और एयर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं इन दैट एटमॉस्फेयर. और फिर वो क्या कहते हैं चेंज हो जाते हैं इनटू अ क्लाउड्स. And then they change to they enter into the face of earth in the form of snow or either rain. And then NASA, after a certain time, after first of all refusing, uske baad University of Hawaii and NASA said ke, it has credibility, but still scientists don't, accept it. And then in NASA ने 1997 में, this was the whole article कि उसने observe किया कि the size, way and every day, and now it's, that universal कि water is not something from here. And then there was this आयत और हदीस जिसका मफहूम था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर आपको पानी दिया है तो अल्लाह सुब्हान तआला अपनी नेमत वापस भी ले सकते हैं. एंड अगेन दैट फॉर ग्रांटेड थिंग कि हम रोज अपनी यूटिलिटीज में ये चीजें यूज करते हैं, वी आर जस्ट नॉट ग्रेटफुल अबाउट दैट. एंड देन द राइटर इज सेइंग कि डजंट इट टिकल योर इमेजिनेशन कि व्हाइट आइस क्यों फ्लोट कर रही है, बाकी सारे सब्सटेंसेस तो नीचे सिंक हो रहे हैं, आइस वाटर ही सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस क्यों डिसॉल्व कर रही है. जो टॉवल है कि कहते हैं उसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्यों नहीं लग रहा, वो क्यों वाटर सोक कर रहा है. इज इट मिस्ट्री, इज इट एक्स्ट्रा टेरिशियल, इज इट अनयूजुअल, व्हाट इज इट. एंड द होल जर्नी जो वाटर कॉस्मोस से ट्रैवल करता है और फिर जाके अर्थ में एंटर होता है. एंड देन ही सेज इसका करंट लिटरेचर आप जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज ऑल जो बुक ने दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, एंड देन इट मेल्टेड द इनटू ओशन में एंटर होता है, एंड दैट्स व्हेन द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस अकर्ड. और उसकी वजह से जो बैलेंस आया था, दैट वाज द इकोलॉजिकल सिस्टम. और उसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में गई उस ओशन के, देन दे बिकम द एल्गी. तो एल्गी में, एंड एल्गी स्टडीड दैट बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस, एंड देन इट प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन. और फिर जब आप ऑक्सीजन को सम अप करते हो, अमेलगमेशन करते हो, यूवी रेज जो ऑफ कोर्स सन से आ रही हैं आपकी अर्थ में, तो उसके बाद आपकी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन क्या कहते हैं अर्थ की इर्द बनती है. So अगर if it's a cycle process, you can say first carbon dioxide died, then the sun rays and photosynthesis, a balanced ecological system हुआ, and then the algae came so with the and it produces the oxygen ने आगे जाके ओजोन किया, and then the फर्स्ट वाटर में से अर्थ क्या कहते हैं फर्स्ट एनिमल निकला जो वाटर में से अर्थ पे चलना स्टार्ट हुआ, एंड एट द एंड फिर अफ्रीका में ह्यूमन पैदा हुआ. अगेन चेक दिस लिटरेचर बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग. So that's what book is saying. 4.6 billion years ago, the Earth came into life, and then the ocean came 3.8 billions, and then the 420 million years क्या कहते हैं water में, depth में, oceans में the life आई, और फिर क्या कहते हैं the Africa में the first human being. And then now the different theories जो scientists ने produce किए, for example, he is pretty famous, Kazam Rakmi, he is first said there is, there is a DNA and there is this renin substance. Basically, what he is saying the more you understand the DNA, the more आप इस चीज को force हो जाओगे admit करने के लिए कि there is something higher dimension thing जो हमारी समझ से बाहर है, because it is such a minute teeny space, और उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने हर minute detail रख दी है, and something great is existing. So like अगर आप still ये कह रहे हो कि this great drama, और आप इसको explain नहीं कर सकते, this life, cosmo, water, everything, so you are wrong. There is something going on in the great cosmos. And then this is the journal again. Greg Brandon is saying what is happening in our DNA. It's that individuals trained in the feelings जो अपनी EI को भी connect करें, जो आपकी feelings हैं, जो positive वाली हैं, the higher frequency वाली हैं, जो कि आपकी love, appreciation, gratitude वाली हैं, and link here Islam too, because there is never a one scenario को देखने
रखने के लिए one layer. There are always multi ones, and never forget your experiences. Then Greg Brendan is saying कि you are able to intentionally change the shape of the DNA in the bodies if you are continuously living in this positive. Then he says कि जब observation की गई, this is the whole scientific journal की you can study it, कि कहते हैं each page number, and कि human emotions जो produce करते हैं affects वो कहते हैं physics जो law के conventional standard laws हैं वो they just can't explain that. Just like a black hole तक तो physics के laws applicable हैं, but a black hole के अंदर one center you don't know वहाँ physics के law लगेंगे कि नहीं. The one liner of this slide is that you can reshape your genetic coding. And then there was human DNA coil. Human you can change your DNA, and this is the difference. जब आपका cortisol level fear में रह रहे हो, आपकी magnetic flux कहाँ जा रहा है, and when you go into the love, positive, gratitude, so then what's happening? So remember your positive emotions, your DNA loosens up, you relax, आपका DNA relax होता है with the compassion, gratitude वाली positive, and जब आप negative होता है, especially your children, any human being in that, आपका coil tighten होता है और वो express नहीं करता fullest potential. Connect the emotions and EIA. Okay. Then there was we understand कि sky so space से water कैसे आ रहा है, and sometimes the what space का water is that much abnormal कि earth को उसको absorb करने में, seep करने में there would be 100 of years कि वो water को seep करे. So this was the John another scientist, and who she says कि उसकी research का था water processing, and उसने water को in word कहा था कि this is a wise water. And then she called it juvenile because it takes everything, it absorbs its memory, everything. So what she is saying is कि water जो pipes में inorganic way में अब जा रहा है जो हमारा, that is unhealthy because there is a 90 का angle. And when you see organic, when you go to the north, आपका water organic way में आ रहा है, which is a circular motion freely falling, which is not how it's traveling in the pipes and the machines. तो high pressure में जब आपका water expose होता है, so what's happening there? It is क्या कहते हैं, आपका cluster break होता है और आपके minerals उसमें से escape हो जाते हैं, which are good for your health. And again the 90-degree that thing is उसके water का magnetic field भी change हो रहा है, जिसको crystal बनाने से रोक रहा है. So what she is saying कि या तो आप there are three solutions कि या तो आप pipes को circular movement में करो, ठीक है, उसको naturally उसके field को जाने दो, या आप क्या कहते हैं magnet use करके again वो magnetic and electric flux लाओ, और introduce those crystals, the positive ones, these crystals उनके अंदर डालो. And then there was again the healthy crops, the concept, the more water is healthy, the more your crops would be healthy. And there is another concept, subcontinent India में specifically that still follows on, कि copper का material, ionization के लिए क्यों best है? They drink in copper stuff. So what is copper doing? And अगर आप World War I से पहले जाओ, so the इतने क्या कहते हैं उस वक्त भी crops के copper material को use किया जाता था. And if you study into the जो हमारी magnetic waves हैं, तो अगर the higher जो ये है ये इस तरह की buildings, so वो पूरी की पूरी gold और copper से बनी होती हैं, और even the Faraday bars, उधर से ये waves आगे नहीं penetrate नहीं कर सकती. So now this scientist John की suggestions थी writer को कि what is the problem right now with us is हम water को respect नहीं कर रहे. Another problem is that it is such a delicate energy, हम इसको consciously accept भी नहीं कर रहे और उस पे practice भी नहीं कर रहे, कि such a delicate energy कि कहते हैं कि हर चीज को respond करती है. And another problem जो World War I के बाद आई, industrialization के बाद आई, we are not protecting water. So and another thing she says कि मेरी research use हो सकती है health and medical care में, but for first we human beings need to understand the physical characteristics of water, because हमें क्या बताया गया, mineral water is good, but really rare people knew कि actually water के अंदर क्या हो रहा है. water के जो mineral water है, that is क्या कहते हैं hardening of your arteries. If this is your artery, this is the so आपकी इस तरह hardening of artery होती है, and what is happening किसकी वजह से हो रहा है, आपके इस water के अंदर carbonated stuff है, which is highly acidic and unhealthy for body. And so we need to avoid these bottles and क्या कहते हैं इसको replace करें natural water के साथ. And then she concludes कि water wants to be free, so if we connect water and soul, the soul needs to be free too, or at least get acknowledged, and we become conscious about its food and its material, जिस तरह हम अपने materialistic body के बारे में हैं. And her last comment was कि natural substances जो nature में जितने भी हैं, they are always weak acid. For example, remember that I guess it was in 9th metric there was this pH experiment where this is your acidic and this is your neutral
and then there's this alkaline, which is, you can call it base. And when you follow up the 0 to 14 pH scale, so your tea coffee is falling in the 5H pH, which is acidic, mild, but 7 ke kareeb hai, so it becomes almost neutral, but not exactly. And the milk, which is 6, and your water is 7. And there's also the difference between the water bottles present in Pakistan, uske pH level mein, and the water bottles present, in other foreign countries. And then this was pretty interesting कि आपकी बॉडी में अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर हर चीज के डिफरेंट फ्लक्स बनाया है, वाइब्रेशन के, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर चीज के कहते हैं पीएच लेवल्स भी डिफरेंट बनाया है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू टेक द saliva आपका माउथ एंड देन द ब्लड, कैपिलरी, आर्टरी एंड वेन्स एंड योर इवन स्पाइनल फ्लूइड, इट इज ऑलमोस्ट 7 जो न्यूट्रल है 7.4. और जब आप न्यूट्रल लेवल से एसिड बेस की तरफ आपकी बॉडी अंदर ट्रेवल करने लग जाती है, सो व्हाट स्टार्ट्स डैमेजिंग दैट आर योर टिश्यूज. अनदर थिंग जो आपके क्या कहते हैं जो टूथ डिके होता है, सो व्हाई डज दैट हैपन, बिकॉज आपके माउथ का पीएच लेवल क्या कहते हैं बैलेंस आउट हो जाता है, और आपकी जो ब्लड बैलेंस है इम्बैलेंस है, वो क्या करता है, वो आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज करने लग जाता है. सो इट्स बेसिकली द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट कि वो जो फ्लूइड है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको डाइजेशन के लिए भी हेल्प कर रहा है, लुब्रिकेशन जो आपकी नीज है, एल्बोज है, इस तरह की जगह पे भी कर रहा है, जो आपको न्यूट्रिएंट दे रहा है बिकॉज इट्स अ ट्रैवलिंग एजेंट, और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है. एंड देन इट इज के एसिड लेवल आपके बॉडीली फंक्शंस पे अफेक्ट होंगे, और जो एसिडिटी बेस है, दैट इज द गेम ऑफ पीएच स्केल में ये. Another thing you can understand from this, for example, your stomach, that is the most acidic, 1.0 to 3.5. इसके अंदर क्या हो रहा है? It is a highly acidic fluid which breaks food, because आपका food भी break होता है, and B आपका digestion भी occur होती है. But what happens जब आपका sphincter layer से कितने क्रॉस करके आपके ओसोफेगस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, योर हार्ट बर्न्स, आपको सोर टेस्ट आता है. एंड इफ यू गो टू डेंटिस्ट, तो दे आल्सो टेल्स यू, एक तो क्या कहते हैं, दिस एसिड आपके माउथ के टीथ डिके का बायस बनता है, एंड अनदर थिंग इज दैट पीएच लेवल, एंड सो व्हाट यू फील इज दैट बर्निंग सेंसेशन, एंड व्हाट यू फील इज दैट एसिडिक, जो बेसिकली ओसोफेगस में क्या कर रहा है, वो आपके एसिड जो है स्टमक का, वो उसको डैमेज कर रहा है, उसके टिश्यूज को. और अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रहने देते हो, सो नॉट इट विल कैंसर कॉज करेगा, बट इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करेगा. And then it was ancient Greece. Ancient Greece kabhi ek, thi ke they paid tribute to water, which was in form of respect. Then there was again Greek myths, protection of water, and then the science appeared and it rejected all those myths and kya kehte hain, scientific, and because it is just not scientific, and you can't explain each and everything scientifically. For example, the soul, you just can't, because there's certain limits of a human being, and we can't cross them. And then the water loss, aista aista just mystic of water khatam hona start ho gaya, another substance. Technology ke liye water is just another substance to do experiments. And then remember the Babylonics in history, when you read that ke ke udhar phir azab aaya tha and unko punishment mili thi, one language se unko different languages de di gayi and they have to disperse out. So but still remember the last crystals in the chapter number 1, even in different languages the same word water can read there, water ke upar wo boundary line nahi aati. And then the 20th century after world war, industrialization ne this problem ki, but Islam has the solution to use those askars. And then the last suggestion was the problem with us is purify water is not pure, hum isko understand kare. And then kya kehte hain, because once it's purified, use those machines and 90 angles, it aapke beautiful crystals nahi ban rahe, aur aapke crystals ban hi nahi rahe. So another problem is the respect element, the gaze point, and you're even when you see the kisi cheez ko aap dekhte ho, you can feel it, बेशक वो चीज आपके पीछे ही क्यों है. So that means there is a specific energy of its own, and it really matters आपकी good intentions हैं या आपकी bad intentions हैं. Just a second. And of course they're talking about the positive and negativity, and then again the Islamic point of view, there is aapko nazar lagti hai, and there are the solution for this, those duas, those scars. And then the Arab culture, where the male follows that their gaze stuff, ki unki nazar niche hoti hain, versus if we go back to the subcontinent, even so what is the problem, which Islam we are following. So we have to take back that, consider that thing too. Okay, where's the problem? And then the hijab, what is exactly that hijab concept, what is it protecting you us from that negative energy, the concept of haya, the modesty, the shyness ko bhi Islam mein encourage kiya gaya hai, and to maintain that purity.
and then the gaze, even जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो, so whether you are in alif position, qiyam position, तो आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए, and how much focus and khushu khudu, so all those things interlinked there too. And so if we connect it with the social media, so what is happening in social media, it's affecting our that soul, and of course soul is linked with that gaze, and it's also affecting, कि एक तो आपका time waste है when you go into the Surah Nas, तो see one of the many interpretation is that कि जब शैतान हर तरफ से फेल हो जाता है आपके ऊपर अफेक्ट करने से, आपको गलत राह पे लाने में, तो आपको उन चीजों में इंडल्ज कर देता है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आपको लगता है इसका कोई नुकसान नहीं है, सो आई कैन डू फॉर एग्जांपल वाचिंग अ क्रिकेट मैच और डूइंग द स्क्रॉलिंग ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज आपके माइंड की एक लिमिट है, एंड वंस दैट इज डन, तो आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब करने में नहीं करता, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर नॉलेज स्टफ टू, even we are learning good stuff on social media, but it's too much the dopaminic stuff, कि we can't just pick one thing और हम उसको for a certain time practice करें, because when you go back to the history, 7th century, Prophet sallallahu alaihi wasallam and Sahaba radhiyallahu anhu was first saying जैसे जैसे वही आती थी और अगली वही तक they practice in the amal, in their action, उनकी life में वो चीज practically happen हो रही थी. So again the question there is कि ilm without amal is what? It's useless, because when you connect it with the akhira, the 5 major questions कि वो जो ilm आपको दिया गया था उस पे आपने अमल कितना किया, so there comes that link. So the social media, one is that time waste, and another is that haya way कि हमारे लिए हर चीज को देखना is okay, मैं कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and of course the billboards. And then the last was this, you can easily watch it, it's pretty famous, water consciousness Masaru Emoto rice experiment, where it's happened के क्या कहते हैं 1 month के लिए rice के 3 containers में लिया गया था, and they were all fine, and in water was added. एक जार को थैंक यू कहा गया था, अनदर को यू फूल कहा गया था, और एक को टोटली इग्नोर किया गया था, एंड आफ्टर 1 month दिस वाज द इफेक्ट. सो व्हाट आर द लेसन्स जो हम इससे लर्न कर सकते हैं कि बीइंग इग्नोर, इसको आप ईआई से कनेक्ट करें, एक इंसान को इग्नोर करना, एक चीज को इग्नोर करना, इवन द प्लांट्स, आप ये एक्सपेरिमेंट प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी और यू मे ब्रॉड वन फॉर एक्सपेरिमेंट. सो इफ यू इग्नोर इट, दैट इज फार मोर डैमेजिंग देन आप एक इंसान का मजाक उड़ाओ, And then this quantum DNA evaluation, the evolution के fear और उस gratitude, positive energy में आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है. Now these things we can see by experiments. And then this thing कि हमें लगता है हम लोगों में जाएंगे, so we will be fine, but introverts can relate this stuff more, because basically जहाँ भी आपकी कभी भी attention आती है, it says always about two-way road of positive and negative energy. So कहते हैं in one word, attention is equal to positive and negative energy, और या तो आपकी जो battery है charging वो ऊपर होगी या नीचे होगी, depends on whatever you like, and whether it's the nerves thing or the roof part. And then next part is EI, the behavior, to most damaging behavior is what that is withholding your attention, and specifically when to your youth, youngsters, your kids, your children. So basically it's lost in this book is all about the energy, vibration, frequency, the resonance. And another thing that this experiment teaches us is about the use of that protection, gratitude, the askar, the alhamdulillah, or even just just make a list. आप किस किस चीज को for granted लेते हो, and then start being conscious about that. And the negative plus positive, and listen, communicate with each other, and specifically youngsters. And what basically children needs is that attention, is that communication, are those positive, kind words, not just in words, because that's another problem. We don't do that in action. And then there's love and gratitude. And at the end, this formula does not apply on your house plants, your pets, your in the insects, the lawn, anything. अगर आप किसी भी चीज को healthy or alive रखना चाहते हो, even yourself, so be gentle, be kind, and use those positive praise words. And this concept, again, Rumi is talking about, what you seek is seeking you. Can you apply the manifestation law on it? And this was just a saying, connect it ke hukam to nafs marne ka tha, lekin logon ne zameen maar di hai. This is nafs, is that negative stuff. Nafs want what? It would vary from person to person agar hum apni life mein dekhen, but nafs want, the nafs part want attention, bring that feud, theory, ID, ego, and super ego. We need to keep speaking, which is contrary to that Islam thing, कि या तो positive बात करो या फिर silence में रहो. And always we are doing is problem, complaints, ये मसला, even when we have everything, instead of saying alhamdulillah, we are just negative, which is a problem, which is a speed breaker, hurdle in your manifestation towards your goals.
And of course, जब ज़मीर वाली चीज़ को connect करें with our ethical moral values, you don't have to be Muslim or a non-Muslim, even you are a human. The ethical, because fitra is same, everyone wants, an honest person with you. It's not a one-way road, it's always about two-way road, not the plastic and fake stuff. And the thing that is really bad here is, you can't be straightforward, you can't tell the truth, but, it's okay to tell the lies. And link this silence and contemplation, because when you open the Quran, so Quran, according to Noman Ali Khan, is that, first you go to the tafsir, that is, the history, what is happening there, the whole chronological order, the primary audience, the secondary audience. And then the second thing is contemplation. For example, right now, today, at this time, ये आया मेरे से कैसे लिंक करती है, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. That is the ilm, because इस contemplation के बाद आप ilm से अमल में आओगे. And then this Ibn Jawzi, very famous, if you find a darkness in your heart after you have sinned, which is, first of all, it's being awareness, it's being conscious about yourself, apne actions ke bare mein, and that darkness is that negative nafs, and then the sin part is again the negative energy. But now come to the positive, the ending, then know that it is in your heart, and there is light. Because of the light, you felt that darkness. So yani that Nur Samawati, connect the Surah Nur, ayat number 35 here to connect the heart. Everywhere in Islam, in meditation, everyone talks about heart. What is there regarding the heart? And what is there? The Nur, Allah subhanahu wa ta'ala's name, and the concept of Nur in Arabic, not in Urdu, because Urdu is not that multi, the way versatility Arabic can define ki ja sakti hai. And then darkness thing. So your positivity can cancel out that negativity, and it's just about, aap kisko upar niche rakhte ho. And at the end, this was pretty interesting कि, plants आपस में interact कैसे करते हैं. And the same way we human also interact with each other's auras. For example, if you look at the energy transference here, so for example, your friend came and he's full of this emotional energies, and क्या कहते हैं, you are conscious and you are right now positive, but when you listen, whether it's a talk, whether it's a cell phone, whether it's anyway text and that, everything has a vibration. So your friend shares this emotional story. Now what happens, your positivity वो तो हल्का होके चला गया, लेकिन कहते हैं वो उस पे ट्रांसफर हो गया, और वो नेगेटिव वाली चीज, सारी और आपके पास आ गई है. So it's that two-way road. हमेशा कुछ ना कुछ interchange हो रहा है. And another way seeing of human energy field, which is this is your divine body, then comes the spiritual body, any higher to lower, and this is your casual body, and this is your mental body, and then there comes the emotional astral body and etheric, and this is the physical auric body in which we all are stuck. And then, so we have so far discussed the tahajjud times, the magnetic electric field, the time, what is the illusion, paradox, and these all theories, the space and time theory, the consciousness, and the space and earth and theory, and क्या कहते हैं, हमारे deeper levels of that chakras and meditation, are the link, is there any, and the heart and mind, and this electric field, and this portal, and this key, what is the key to understand ourselves? And they were quotes from Lao Tzu and Bruce Lee, and these are the just for a suggestion, though I don't would like to suggest, but अपने mind को open करने के लिए, these concepts of Tesla's and Einstein are being discussed in this series, the Secret of Skinwalker Ants. Then the Matrix, pretty famous movie, which says, it's just question is, are you conscious about the matrix we are living in? So it's a question to ourselves. And the simulation concept is discussed in this too, and many more. So it's just about आपका किसमें interest है. And at the end, Jazakallah khair for your time and energy for hearing it out. And that's all from me.